Hello everyone, welcome back to our channel, and today we are going to discuss October 2nd week complete current affairs. I'm really sorry for not keeping up to date, but from today onwards we would be up to date with our current affairs, PIB, schemes or any other important details. So we are going to also discuss schemes, and we are going to discuss our remaining schemes from today itself, and we are going to complete our PIB also and our pending current affairs also. So today we are going to discuss complete October 2nd week coverage of current affairs, and likewise we will cover third and fourth week too, and likewise we'll be completed by our October current affairs. Right, so let us start with first news, and then let's just discuss what is there for us to learn. Now, the first question says that the Ministry of Labour and Employment recently has signed an MOU with which company to enhance access to flexible and technology-enabled livelihood opportunities through NCS portal. NCS means National Career Service Portal. So मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक MOU साइन किया है जोमेटो के साथ, ताकि फ्लेक्सिबल एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जा सके थ्रू नेशनल करियर सर्विस पोर्टल. Now, MCQs like these or questions like these are very important. We have seen in our recent RBI exam, बहुत सारे questions came from what we discussed. छोटे छोटे क्वेश्चंस वर ऑल्सो आस्क्ड, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको सारे इम्पॉर्टेंट MOUs एंड इम्पॉर्टेंट डिटेल्स पता हो for our upcoming exams such as SEBI or NABARD or any other exam. These MCQs are really very important. Now, second MCQ says that LIMBS live dashboard was launched by which ministry? So first of all, what is LIMBS? So LIMBS stands for Legal Information Management and Briefing System. Now what has happened, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने इनॉग्रेट किया है डैशबोर्ड लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम्स के लिए at New Delhi. Now what will this do? This dashboard will enhance transparency, accountability and efficiency in managing government litigation. तो ताकि गवर्नमेंट लिटिगेशन अच्छे से हो पाए, तो इस डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है. तो आपको इस डैशबोर्ड का नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फॉर लिटिगेशन पर्पसेस LIMBS डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है. फॉर एग्जाम्पल MCQs कैन बी फ्रेम्ड कि लिटिगेशन के लिए फॉर सो एंड सो पर्पस विच डैशबोर्ड वॉज लॉन्च, एंड वन ऑफ द ऑप्शन वुड बी LIMBS. सो आपको इसलिए पता होना चाहिए दैट लिम्स डैशबोर्ड हैज़ बीन लॉन्च फॉर लिटिगेशन पर्पसेस. Right. Now, Indian Air Force has conducted a joint aerial exercise over Indian Ocean region with which country's Carrier Strike Group. So recently Indian Air Force ने UK के साथ एक joint exercise किए है Indian Ocean region के ऊपर, and इस country के Carrier Strike Group के साथ. So you have to remember that this was done with UK. Right. Now, I believe one of the most important question is that limestone was reclassified as major mineral. So you have to remember this, that recently limestone को हमने reclassify कर दिया है as a major mineral. पहले ये major mineral नहीं था, but अभी हमने इसको status दे दिया है of a major mineral. So limestone को now is classified as a major mineral. Now this was done under MMDR Act of 1957. MMDR stands for Mines and Minerals Development and Regulation Act of 1957. ये जो एक्ट है ये सारे मिनरल्स को रेगुलेट करता है. Now it was done under which section? So this is important that it was done under section 20A. So under section 20A, limestone was reclassified as a major mineral under MMDR Act of 1957. Right. Now, again a very important question that says that the tenure of 16th Finance Commission has been extended by Government of India till which date? So 16th Finance Commission का जो tenure है वो extend कर दिया गया है. Now it is up to 30th of November 2025. Firstly it was 30th of October तक, but now it has been extended to 30th of November. And when it was constituted on 31st of December 2023. Now it is from here to 30th of November 2025, right? And you also have to remember that 16th Financial Commission's recommendations will cover which fiscal period. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 16th फाइनेंस कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ,
राइट। अब आपको ये याद रखना है कि जो रिकमेंडेशन 16th फाइनेंस कमीशन देगा वो कौन सा फिजिकल पीरियड या कितना टेन्योर कवर करेगा. सो इट विल कवर फ्रॉम 2026 टू 2031. सो डोंट गेट कन्फ्यूज. ये जो कमीशन बैठा इट वॉज ऑन 31st of December 2023. इट्स बीन एक्सटेंडेड टू 30th of November 2025 एंड ये रिकमेंडेशंस कवर करेगा फ्रॉम 2026 टू 2031. एंड हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन? सो द chairman is Arvind Panagaria. So Arvind Panagaria is the chairman of 16th Finance Commission. राइट. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम्स में आ जाते हैं, देन वी गेट कन्फ्यूज कि कहाँ से आया. अभी रिसेंटली हमने आरबीआई एग्जाम में देखा कि हमें पॉलिटी से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो यू हैव टू बी अवेयर कि क्या चल रहा है. तो कुछ पॉलिटी साइड, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन साइड यू हैव टू नो अबाउट इट. So under which article of constitution does finance commission recommend grants and aid from consolidated fund of India? So the right answer is 275. So article 275 के अंदर फाइनेंस कमीशन जो सेटअप होता है वो रिकमेंडेशंस देता है. So you have to remember this. Right. Now next question is, the Ministry of Minority Affairs established Centers of Excellence under which scheme to promote heritage and classical language? So Ministry of Minority Affairs ने Centers of Excellence establish किए हैं अंडर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना और स्कीम, ताकि हेरिटेज एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा सके. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्कीम, दैट इज़ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम. सो प्लीज़ रिमेंबर कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किए हैं, ताकि व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस, इट विल प्रमोट हेरिटेज एंड क्लासिकल लैंग्वेजेस. Now, under this initiative, which university was inaugurated a Center for Jain Studies? So, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, यानी कि DAVV of Indore, has inaugurated a Center of Jain Studies too. So, please remember that DAVV Indore has inaugurated a Center of Jain Studies. So let us just read what is there. That Ministry of Minority Affairs has established centers of excellence under Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram, to preserve heritage and classical languages of minority communities. Under this, DAVV Indore has inaugurated a center of Jain studies, and इससे क्या होगा? Jain heritage, culture, literature, arts will be promoted. Next is, India's first AI Center of Excellence for Public Good was launched by which organization in collaboration with Google Cloud India? So the right answer is Tech Bharat Research Foundation. So Tech Bharat Research Foundation has, Tech Bharat Research Foundation has collaborated with Google Cloud India, ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्टैब्लिश किया जा सके. दैट वुड बी AI इन नेचर फॉर पब्लिक गुड्स. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस कोलैबोरेशन. नाउ, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड्स लॉन्च? सो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया गया है? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट वॉज लॉन्च इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. सो टेक भारत रिसर्च फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद गूगल क्लाउड इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पब्लिक गुड्स इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. नाउ, a small important news of which I couldn't frame any MCQ, but you should know this, that Union Minister Nitin Gadkari, that is Minister of Road Transport and Highways, you should also know which minister is having which ministry, because in recent exam it was also asked that Piyush Goyal is minister of which ministry, so you should be aware of ministers too. So Nitin Gadkari is Minister of Road Transport and Highways. He have inaugurated and laid the foundation stones of 3 national highway projects worth 2,000 crore rupees in Puducherry. So please remember this short information. Now, next question is that which organization recently released the report titled India's Blue Economy Strategy for Harnessing Deep Sea and Offshore Fisheries? इस रिपोर्ट को किस मिनिस्ट्रीज़ या किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? द रिपोर्ट टाइटल इज़ इंडियाज़ ब्लू इकोनॉमी. सो इट्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग
it is not released by Ministry of Fisheries or FAO. So you have to be aware that this report, that is with the name India's Blue Economy, is launched by Niti Aayog. Now इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, सो लेट अस जस्ट क्विकली सी कि क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमको याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, India is second in fish production. This you have to remember, and this I am hoping that you already know. But you should also know that what percentage of global fish production does India contribute. So globally अगर हम बात करें तो India का fish production is around 8%. So you have to know this, that India contribute around 8% of global fish production. Now what was India's export earning from fish and fisheries product in 2023-24? So India के export earnings were around 60,000 crore rupees. So you have to know or have the idea कि क्या export earnings हुई है and what was the contribution. So 8% is the contribution in exports. 60,000 crore rupees is the export earnings from fish and fishery products. Now, what is the outer limit of India's exclusive economic zone? So I hope that you are aware of exclusive economic zone. So वो उसका जो outer limit है वो कितना होता है? It is up to 200 nautical miles. And what is the inner limit of India's exclusive economic zone? That I am leaving up to you. Please tell me in the comment section that what is the inner limit of India's exclusive economic zone. Meaning कि इंडिया का जो exclusive economic zone है वो कितने nautical miles से 200 nautical miles है. This I have told you, but from how much nautical miles? It is up to 200 nautical miles. So India is second largest fish producing country, 8% of global output, and India earned 60,000 around crore rupees in fish exports, and it supports 30 million livelihoods. Right. Now next is the 9th edition of India Mobile Congress, that is IMC 2025, was held under which theme? So अभी recently इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुआ है 2025. तो ये कहाँ हुआ है, इसका थीम क्या है, एंड व्हाट आर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो 9th एडिशन हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दिस, दैट इट वॉज 9th एडिशन एंड इट वॉज हेल्ड अंडर विच थीम? इट वॉज हेल्ड अंडर थीम दैट इज इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म. सो द थीम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कुछ चीज़ रिसेंटली हुआ है सो थीम्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस किस थीम के अंदर हुआ है? दैट इज़ इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म. Now, where it was held? So it was held in Yashobhoomi India International Convention and Expo Center, that is New Delhi. So New Delhi की Yashobhoomi Convention Center में ये हुआ है. Right. Now it was organized in partnership with which organization? So you may get confused कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस है तो ट्राई भी हो सकता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी काउंसिल भी हो सकता है, नेस्कॉम भी हो सकता है, बट यू पर्टिकुलरली हैव टू रिमेंबर दैट इट इज़ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. सो COAI की एसोसिएशन से, पार्टनरशिप से इस कांग्रेस को फॉरवर्ड टेक ओवर किया गया है. नाउ भारत सिख जी अलायंस sign MOUs with which organization during this Congress, that is IMC 2025? So Bharat 6G Alliance ने MOU sign किए हैं with NASCOM and European Space Agency under this particular Congress that was held. Who inaugurated India's first ever satellite communication, that is SATCOM summit at this Congress, that is India Mobile Congress 2025? Again, ministers are important, as recently it was also asked in our exam. So you have to know that it was Jyotiraditya Scindia, and who is the Minister of Communication. So he inaugurated first ever satellite communication summit. And what was the theme of this first summit? जो भी चीज़ फर्स्ट बार हुई होती है या इट इज़ टेकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट सेटकॉम समिट का थीम था स्पेस नेटवर्क्स फॉर यूनिवर्सल कनेक्टिविटी. सो बी इज़ द राइट आंसर. राइट. नाउ under Universal Service Obligation Fund and Digital Bharat Nidhi, how many remote villages are targeted to be connected? I believe one of the most important questions, अगर Ministry of Communication से कुछ question पूछा जाएगा या digital related if anything is asked, this is one of the most important question that says कि Universal Service Obligation Fund and डिजिटल भारत निधि के अंदर गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है
कि हमें 38,000 रिमोट विलेजेस को कनेक्ट करना है एंड इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अराउंड 40,000 करोड़ रुपीज़ की. सो वॉट इज़ दिस? वी वॉन्ट टू कनेक्ट आर विलेजेस डिजिटली ताकि हम कनेक्शंस प्रोवाइड कर सकें, हम वहाँ पर जो भी वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं उसको प्रोवाइड कर सकें. सो हमारा टारगेट है कि हम 38,000 विलेजेस को केटर करें एंड विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 करोड़ रुपीज़, इन विच अप्रॉक्सीमेटली 29,000 विलेजेस हैव बीन ऑलरेडी कनेक्टेड. तो कितने विलेजेस का टारगेट है? तो टारगेट इज़ ऑफ 38,000 villages. Next, Netflix India has partnered with which organization to support students in AVGC XR sector? Now, what is this sector? It stands for animation, visual effects, then gaming, comics and extended reality. सो इन सेक्टर्स में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए नेटफ्लिक्स इंडिया ने पार्टनरशिप किया है विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? सो द राइट आंसर इज IICT एंड FICCI. IICT is Indian Institute of Chemical Technology that is situated in Hyderabad. सो IICT एंड FICCI ने पार्टनरशिप किया है नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ सो दैट स्टूडेंट्स कैन बी सपोर्टेड इन एनिमेशन, वीडियो, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर. Now, where was this 25th FICCI Frames event held? So, it was held in Mumbai. So, D is the right answer. Now, Netflix India has collaborated with FICCI and Indian Institute of Creative Technology. I'm sorry, it's not chemical technology, it's creative technology. So, Indian Institute of Creative Technology के साथ Netflix India ने collaborate किया है ताकि students को support किया जा सके in animation, visual effects, gaming, comics and extended reality sector. And this event was held in Mumbai. So I'm really sorry, this institute is not in Hyderabad, it is in Mumbai. IICT stands for Indian Institute of Creative Technology and this institute is in Mumbai. Now, very important questions for NABARD point of view. This is about Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana and Mission for Atmanirbharta in pulses. So firstly, let us just read information and we'll come back to MCQs. So PM ने लॉन्च किया है PM धन धान्य कृषि योजना एंड मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस. ये हम ऑलरेडी बजट सेशंस में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में कवर कर चुके हैं, बट नाउ इफ इट इज़ फॉर्मली लॉन्च सो वी हैव टू नो एंड हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट दीज स्कीम्स आर. So Pradhan Mantri has launched this PM Dhan Dhanya Krishi Yojana and Mission for Atmanirbharta in pulses, and it was launched in New Delhi in IARI Institute under Krishi program. Total outlay is very important. आपको दोनों schemes का total outlay पता होना चाहिए and also separately you have to know कि what is the outlay of each scheme. So total outlay is 35,440 crore rupees. Inaugurated dedicated agriculture related projects worth 5,450 crore rupees also, and foundation stone of projects worth 815 crore rupees were also launched. Now certificates were also distributed, but you also just need to know this that प्रधानमंत्री अंडर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जब हमने इस स्कीम को कवर किया था वी कवर्ड कि इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि 100 एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स वुड बी कवर्ड, जहाँ पर क्या होगा हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकें. सो नाउ the outlay has been released that for 5 years the outlay is 24,000 crore rupees. 24,000 crore rupees would be allocated to this particular scheme for 5 years, जिसमें 100 agriculture districts को cover किया है, and under this convergence of 36 central schemes across 11 ministries is taking place. ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी सिंपल, हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी को बूस्ट करना है, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है एंड एक्सेस टू एग्रीकल्चर क्रेडिट को इम्प्रूव करना है, एक्सपैंड करना है. नाउ दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू. क्या मेन्स में आप इन पॉइंट्स को ऐड करके लिख सकते हैं. District selection criteria would take place based on agri output per unit area, cropping intensity and availability of institutional credit. अंडर नेक्स्ट स्कीम दैट इज़ मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, आपको इसका आउटले भी याद रखना है दैट इज़ 11,440 करोड़ रुपीज़ अगेन फॉर 5 years. यहाँ पर हमें सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करनी है पल्सेस में एंड वी आर फोकसिंग ऑन 3 important pulses दैट इज़ तुअर, मसूर एंड उड़द दाल.
राइट नाउ एरिया एक्सपेंशन वुड टेक प्लेस, 5 ईयर का सीड प्रोडक्शन प्लान्स होंगे. ICR विल मॉनिटर सीड प्रोडक्शन वाया साथी पोर्टल. दिस पोर्टल वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. पोस्ट हार्वेस्ट में हम 1000 प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश करेंगे विद 25 लाख रुपीज़ सब्सिडी पर यूनिट. हमारे टारगेट्स हैं कि हमको ईल्ड बढ़ानी है, कल्टीवेशन एरिया इंप्रूव करना है. वी वांट टू इम्प्रूव आवर कल्टीवेशन एरिया बाय 310 लाख हेक्टर्स, प्रोडक्शन बाय 350 लाख टन्स. ईल्ड हमको इम्प्रूव करनी है. वी वांट टू प्रमोट क्लाइमेट रेसिलिएंट एंड सॉइल हेल्थ फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड ऑल्सो वी वांट टू रिड्यूस इम्पोर्ट ऑफ पल्सेस ताकि हम सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव कर पाएँ. सो दिस इज़ आवर दलहन मिशन या फिर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, आप कुछ भी बोल सकते हैं. वी ऑल्सो स्टडीड दैट इसमें प्रोक्योरमेंट होगा. प्रोक्योरमेंट वुड बी डन एंड द प्रोक्योरमेंट वुड बी डन फॉर 4 years and it is not 5 years wait, it is 6-year mission and procurement would be done for 4 years and it is a 6-year mission. So please remember all these details, targets you have to remember. Also I'll bring separate video जो भी important recent schemes agriculture की in detail. So we'll do there हमारी पूरी स्कीम अच्छे से डिटेल में. सो व्हाट आर द क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन है कि टोटल आउटले क्या है. सो टोटल आउटले इज़ 35,440 करोड़ रुपीज़. धन धान्य का आउटले इज़ 24,000 करोड़ रुपीज़. एंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वुड बी कवर्ड इन धन धान्य योजना. सो 100 districts would be covered. Right. Now, what is the implementation period of Dhan Dhanya? So implementation period is 2025-26 to 2030-31. And how many central schemes and ministries will converge? So 36 schemes and 11 ministries will converge. Atmanirbharta and pulses ka outlay is 11,440 crore rupees. Now next important question is, which organization has signed an MOU with Sehkar Taxi कोऑपरेटिव लिमिटेड, दैट इज़ भारत टैक्सी. सो भारत टैक्सी के साथ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने MOU साइन किया है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो NEGD दैट इज़ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं. इसने MOU साइन किया है विद सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ऑपरेटिंग अंडर द ब्रांड भारत टैक्सी. सो इससे क्या होगा, यू वांट टू एक्सटेंड टेक्निकल सपोर्ट फॉर डेवलपिंग भारत टैक्सीज कोऑपरेटिव ड्रिवन सिटीजन फर्स्ट नेशनल राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म. भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म जो है वो दिसंबर 2025 के लिए शेड्यूल्ड है टू बी लॉन्च्ड. Now next question is that which authority has announced a collaboration with IISc and IIT Madras for water security and resilience project. So with IISc Bengaluru and IIT Madras, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस अथॉरिटी ने MOU साइन किया है फॉर वाटर सिक्योरिटी, दैट इज़ ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस दैट ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी हैज़ साइन द MOU. Next is Spark. So Spark 4.0 has been launched under which ministry and what does Spark stands for? So it is important. Please just focus and just read it. That Spark 4.0 was launched under Ministry of Ayush. Spark stands for Studentship Program for Ayurveda Research Cane. So B is the right answer. Please remember this, that Studentship Program for Ayurveda Research Cane is Spark का full form है. The Central Council for Research in Ayurvedic Sciences under Ministry of Ayush has launched 4th edition of Spark, that is Spark 4.0. और इसके full form are very very important. Organization like these full form are very important. Studentship Program for Ayurveda Research Cane, ये program क्या करेगा? It will encourage research aptitude and evidence-based inquiry among undergraduate Ayurveda students across India. So please remember this, that each student will also receive studentship of 50,000 rupees, that is 25,000 rupees per month for 2 months, and along with a certificate after completion. Registration window is open from 15th of October to 15th of November. So 50,000 rupees की studentship मिलेगी, 25,000 per month for 2 months studentship would be awarded, and the full form is Studentship Program for Ayurveda Research Cane. Now next is that which of the following port is not among those, please remember this, it is asking not among those recognized as green hydrogen hubs under National Green Hydrogen Mission. So National Green Hydrogen Mission के अंदर 3
पोर्ट्स को हमने रिकॉग्नाइज किया है एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट सेज कि 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब्स की तरह पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है. इसमें से वो कौन सा पोर्ट नहीं है? सो आंसर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र इज नॉट वन ऑफ द पोर्ट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज ग्रीन हाइड्रोजन हब्स. So the ports are Deen Dayal Port, Paradeep Port and Vio Chidambaram Port of Tamil Nadu. Now what is the total outlay of this mission? The total outlay is 19,744 crore rupees. Right. Now which organization conducted a 2-day regional search and rescue exercise that is RE-SEREX 2025? So ये exercise हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट की है 2-day रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज. नाउ दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन अरेबियन सी ऑफ पेनाम्बूर कोस्ट ऑफ मैंगलुरु. सो अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज हुई है मैंगलुरु में. आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी. इट्स पेनाम्बूर कोस्ट ऑफ मैंगलुरु. सो ये एक्सरसाइज हुई है बाय इंडियन कोस्ट गार्ड. NTPC Renewable Energy Limited has signed an MOU with which state government to develop a 15 gigawatt renewable energy project. So again a very important question that asks कि NTPC Renewable Energy Limited ने MOU साइन किया है किस state government के साथ? So गुजरात के साथ MOU has been signed to develop a 15 gigawatt renewable energy projects. So Gujarat is the right answer. Now, Department of Drinking Water and Sanitation has signed a memorandum of agreement with BISAC and to strengthen digital monitoring. BISAC stands for Bhaskaracharya National Institute of Space Applications and Geoinformatives, जो कि एक ऑटोनॉमस साइंटिफिक सोसाइटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन न्यू दिल्ली. Which organization has released a study titled AI for Inclusive Societal Development? Abhi recently we also studied Blue Economy report that was also released by Niti Aayog. Now this report that says AI for Inclusive Societal Development has also been released by Niti Aayog. So please remember this. Now it was released in collaboration with Deloitte. So in collaboration with Deloitte, this report, this study was released by Niti Aayog that says AI for Inclusive Societal Development. Now let us just see what was all there in this. So it was launched by Jayant Chaudhary, who is Minister of Skill for Skill Development and Entrepreneurship and Education, and Suman Beri, who is Vice Chairperson of Niti Aayog. It was prepared by Niti Aayog and Deloitte. And ये क्यों प्रिपेयर किया गया है? टू शो दैट हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI कैन इम्प्रूव लाइव्स एंड लाइवलीहुड स्पेशली फॉर इंडियाज 490 million informal workers like daily wage earners, drivers, vendors, etc. Now again a very important question that says that under PM Vikas, which ministry has signed an MOU with IIT Palakkad for a skilling project? So Ministry of Minority Affairs ने MOU साइन किया है with IIT Palakkad for skilling project under PM Vikas. Next is that which ministry expanded eNAM platform by adding 9 new commodities? So from NABARD perspective, again important question that says that किस ministry ने, so we know eNAM is under Ministry of Agriculture, so that's quite obvious, but what you also need to know that 9 new commodities were added in eNAM platform. So now the total commodities that are tradable on eNAM platform is 247. So now total commodities traded are 247 and recently 9 new commodities have been added. So how many commodities have been added? So 9 new commodities have been added. What is the full form of eNAM? eNAM stands for Electronic National Agriculture Market. So A is the right answer. Next is that which 3 organizations have signed an MOU to strengthen telecom policy, research and capacity building? So अभी recently MOU साइन किया है किस 3 ऑर्गेनाइजेशन ने? So organizations are Department of Telecommunication, National Communication Academy and GSM Association. So these 3 bodies or organizations have signed an MOU ताकि telecom policy, research and capacity building को strengthen किया जा सके.
Next is that which institute has signed an MOU with Indian Navy to strengthen research and technology collaborations. So Indian Navy के साथ IIT मद्रास ने MOU साइन किया है ताकि टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च कोलैबोरेशंस को स्ट्रेंथन किया जा सके. So you have to remember that IIT Madras plus Indian Navy has signed MOU. Now India was elected to United Nations Human Rights Council for which term? So recently India has been elected to United Nations Human Rights Council for 2026 to 2028 term. Let us just see what has happened. So India has been elected unopposed to this council फॉर 2026 टू 2028 टर्म, जिसमें इंडिया को 177 वोट्स मिले आउट ऑफ 188 वोट्स एंड दिस इज 7th टेन्योर ऑन द काउंसिल ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट इज दिस बॉडी? यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो एक 47 मेंबर इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूएन के अंदर आती है, जिसका काम है ह्यूमन राइट्स ग्लोबली को मॉनिटर करना, प्रोटेक्ट करना. जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो 3 years के टर्म को सर्व करते हैं एंड दे आर इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थ्रू अ सीक्रेट बैलेट. अभी 14 न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड, जिसमें से इंडिया वन ऑफ देम है, जिसमें इंडिया को अनअपोजिटली वोट किया गया है एंड इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड. नाउ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बाद एक कंट्री वापस री इलेक्ट नहीं हो सकती है. सो आफ्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एक ब्रेक होगा और उसके बाद एक कंट्री को वापस इलेक्ट किया जा सकता है. सो दिस इज 7th टेन्योर ऑफ इंडिया ऑन दिस काउंसिल. Which Indian naval ship participated in inaugural INROKN? So ROKN stands for Republic of Korea. So इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच में बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज हुई है. सो इस नेवल एक्सरसाइज में जिस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है दैट इज़ INS शिवालिक. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट INS शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया है इन इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरियन bilateral naval exercise. This exercise was held where? So this exercise was held in Busan, South Korea. Where is India-Australia joint military exercise, that is Austra-Hind 2025 being held? So this exercise is being held in Perth, that is in Australia. So Australia के Perth नाम के जगह पर this military exercise that is with the name Austra-Hind is being held. Next is that which country became first in the world to achieve triple elimination of mother to child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B. So 3 diseases को कौन सी कंट्री फर्स्ट इन द वर्ल्ड बनी है जिसने ट्रिपल एलिमिनेशन किया है ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ 3 डिसीजेज, दैट इज HIV, syphilis and hepatitis B. So the right answer is Maldives. So please remember this. Next is that where was 68th Commonwealth Parliamentary Conference held in 2025 and what is the theme of this conference? So this conference has been held in Bridgetown, Barbados. So ये कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ पर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है. ऑल्सो यू शुड नो दैट 69th कॉन्फ्रेंस दैट इज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन इंडिया and this 2025 that is 68th conference was held in Barbados and the theme of this conference was Commonwealth, a global partner. Which organization has released report that is titled with the State of Social Justice 2025 a work in progress? So State of Social Justice नाम की रिपोर्ट रिलीज़ की है ILO ने और ये रिपोर्ट जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेवरल क्वेश्चन जो इस रिपोर्ट से हैं. एग्जाम सच एज RBI या SEBI या NABARD में ये रिपोर्ट्स डायरेक्टली पूछी जाती हैं एंड इफ़ इट्स रिलीज रिसेंटली दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो एवरी डिटेल ऑफ दिस रिपोर्ट. हालांकि हम रिपोर्ट्स को और डिफरेंटली भी टैकल करेंगे, वी विल ऑल्सो ट्राई टू रीड डिफरेंटली एक सेशन में रिपोर्ट्स को, बट हेयर ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंप्लीट दिस रिपोर्ट. So please remember the State of Social Justice 2025 a work in progress is the name of the report that is released by ILO, that is International Labour Organization. Now what does this report says? According to report, child labor among children that are of age 5 to 14 years, यानी कि जो children 5 to 14 years के बीच में हैं उनके इस एज ग्रुप में जो चाइल्ड लेबर है वो डिक्रीज हुआ है. Firstly, it was 250 million children being engaged in child labor in 1995. But now it's reported that in 2024, this number has gone down to just more than half. So it is now 106 million children. It's still very high. But you have to remember this, that the
the report, according to report, the child labor data of children that are of age 5 to 14 years, जो पहले 250 million था, now it is 106 million. Now, as per this report, the rate of child labor fell from 20.6%. In percentage, it was 20.6%, and now it is 7.8%. Yani we now have two data that says 250 million, that is 20.6%. Now it is 106 million, that is 7.8%. So please remember this part. This data is of child labor. Now, how many children are still in child labor globally as per this report? So अगर हम 5 to 17 years के children की बात करें जो अभी भी child labor में engaged हैं, that are 138 million. Why there is a difference? Because here यहाँ पे हम बात कर रहे थे 5 to 14 years की. 5 to 14 years की बात करें तो 106 million children are there, and if we talk about 5 to 17 years, so 138 million children are still engaged in child labor. Now, global extreme poverty rate has also declined from 4 in 10 in 1995 to how many in 10? So, पहले जो हम global extreme poverty rate की बात करें तो हर 10 में से 4 लोग जो थे, हर 10 में से जो 4 लोग थे वो extreme poverty के अंदर आते थे. But now this number in 2023 is 1 in every 10 people. So, this has now become 1 in every 10 people. Global working poverty has also declined from 27.9% to 6.9% in 2024. So global working poverty में भी decline आया है. You have to remember the percentage data. Next is, for the first time more than dash percentage of world's population is covered by social protection. Again a very important question that says कि अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि 50% से ज़्यादा जो हमारी population है वो हमने socially protect कर ली है. It's covered by social protection. Social protection means any kind of insurance schemes. Social protection is being provided. So the first time more than 50% of world population is covered now by social protection. Next is that according to report, labor productivity per worker has also increased by what percentage worldwide since 1995? So labor productivity per worker has increased by 78%, and that is a good increase, good percentage increase. That says कि labor productivity भी बढ़ी है अगर हम per worker बात करें, and it is increased by 78% worldwide since 1995. Last is that what percentage of world's wealth is held by top 1% of population? So 38% of wealth is being held by टॉप 1% ऑफ पॉपुलेशन. यानी जो हमारे टॉप 1% ऑफ पॉपुलेशन है वो अराउंड 38% ऑफ वेल्थ को होल्ड करे हुए हैं. सो लेट मी जस्ट मेक यू रिवाइज all these MCQs. These are very important. First of all, the report was released by ILO that says the state of social justice report. Child labor decrease हुआ है 20.6%, 250 million to 106 million, 7.8%. In 5 to 17 years category, it is 138 million. Extreme poverty is decreased from 4 in 10 to 1 in 10. Global working poverty has decreased from 27.9% to 6.9%. For the first time 50% से ज़्यादा population social protection के अंदर covered है. Labor productivity increase हुई है 78% से if we compare it by from 1995, and top 1% जो है टॉप 1% जो है वो 38% ऑफ वेल्थ को होल्ड करा हुआ है. Now let us just quickly see what is this report. So this report was released by ILO that says the state of social justice report. The purpose was to assess progress made globally in achieving social justice, reducing inequality, improving labor condition and ensuring inclusive growth. It was released ahead of second World Summit for Social Development. यानी कि नवंबर 2025 में दोहा कतर में एक समिट होने वाली है, जो जब होगी नवंबर में we'll study about that. But second World Summit for Social Development is going to take place in Doha, Qatar. Ahead of this summit, this report has been released. तो child labor की हमने बात की, तो child labor has reduced from 250 million to 106. Rate has been fall from 20.6 to 7.8, and 138 million children in age 5 to 17 years. Poverty has decreased from 4 in 10 to 1 in 10, and reduced from 27.9% to 6.9% if we talk about working poverty.
Education progress has also happened. Primary school completion rate, so 10% it has increased, and if we talk about secondary school completion rate, so it's increased by 22% since the year 2000. So you have to remember this, that primary school completion rate बढ़ा है 10% से, and secondary school completion rate बढ़ा है by 22%. सोशल प्रोटेक्शन हमने बात की, 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय सम फॉर्म ऑफ सोशल प्रोटेक्शन नाउ. इफ वी टॉक अबाउट वर्क रिलेटेड मोर्टेलिटी मतलब जो डेथ्स हो रही हैं ड्यू टू अनसेफ और अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन, यानी क्योंकि वर्किंग कंडीशन हेल्दी नहीं थी, सेफ नहीं थी, तो उस जगह पर डेथ हो गई है वर्कर की. सो इट हैज़ डिक्रीज बाय ओवर 10% सिंस 2000. लेबर प्रोडक्टिविटी हैज़ रोज बाय 78% वर्ल्ड वाइड, and labor productivity has increased by 215% if we talk about in upper middle income countries. Productivity inequality between countries has also dropped 40% since 1995, narrowing global economic gaps. इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्टिविटी के बीच में इनइक्वालिटी थी, फॉर एग्जांपल अफ्रीका में जो वर्कर की जो एक वर्कर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वर्सेस यूएसए में एक वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है, उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो इनइक्वालिटी है, इट हैज़ ऑल्सो ड्रॉप्ड 40% सिंस 1995. इसके वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक गैप्स है वो नैरो हो रहे हैं. राइट. ऑल्सो सम मोर क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन आर देयर. लेट अस जस्ट सी. अकॉर्डिंग टू ILO, यानी कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में ही बात हो रही है, दैट इट मे टेक हाउ मैनी ईयर्स टू क्लोज द जेंडर वेज गैप एट करेंट रेट. अगर हम करेंट रेट पर ही चले तो हमें 50 to 100 मोर ईयर्स लगेंगे ताकि हम ये जेंडर वेज गैप को क्लोज कर सकें. सो यू हैव टू रिमेंबर इट्स 50 to 100 ईयर्स. What is a global informality rate of employment as per the report? तो global informality यानी कितना जो हमारा employment है वो informal employment है अभी भी, किस rate पे informality चल रही है. So this is 58%. So you also have to remember this, that global informality rate is 58%. That is quite high. Right. Now we are done with this report and we can move to our next sets of question that says that which state has launched Shraddhanjali scheme to ensure dignified return of mortal remains of its residents who die outside the state. यानी अगर कोई लोग जो स्टेट के बाहर जिनकी डेथ हो गई है तो हम चाहते हैं कि डिग्निफाइड रिटर्न हो उन लोगों का अपने स्टेट्स को, तो इस स्कीम को लॉन्च किया है श्रद्धांजलि स्कीम के नाम से असम गवर्नमेंट ने. सो श्रद्धांजलि स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय असम. Right. Now Maharashtra Airport Development Company has signed an MOU with which international company to develop a world-class convention, exhibition and cultural academic center in Nagpur. So first of all you also have to remember कि ये जो world-class convention center establish हो रहा है that would be established in Nagpur. Now Maharashtra Airport Development Company has signed an MOU. Now with which international company? It is FIRA Barcelona International, so B is the right answer. Which Indian state has declared 2025 as Year of Urban Development? So Gujarat is the state जिसने declare किया है कि हम declare करते हैं 2025 as Year of Urban Development. India ranks dash as largest producer and consumer of coal, and what position does it hold in globally in terms of reserves? So तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, that is in with respect to coal, that is India coal का which number it is at producer, consumer and then reserves. So you have to know all these three datas. So India is ranked as second largest producer, second largest consumer and fifth largest in terms of reserves. So आपको make sure करना है that you should know all these three data points: second largest consumer, second largest consumer and second largest producer, and fifth in terms of reserves of coal. Next is that Madhya Pradesh government has also signed an MOU with FIRA Barcelona International to develop a world-class convention center in which city? So it is in Bhopal, and we recently studied कि महाराष्ट्र ने भी MOU sign किया है for establishing world-class center in Nagpur. So Nagpur and Bhopal you have to remember. Next is what is the total financial outlay of critical mineral recycling incentive scheme? तो इस स्कीम का total financial outlay is 1485 करोड़ रुपीज़. So
185 crore rupees is the right answer. And which of the following correctly represents the distribution of funds under this scheme? So I'll just tell you some information about the scheme, and you will know what is the distribution. So सबसे पहले this scheme is very very important, that it stands for Critical Mineral Recycling Incentive Scheme, that's launched by Ministry of Mines. Now it is implemented under National Critical Mineral Mission. टोटल आउटले इज 1485 करोड़ रुपीज़ और गोल क्या है? टू प्रमोट रिसाइकलिंग एंड रिकवरी ऑफ की मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट स्ट्रीम्स इन इंडिया. तो हमें बात करना है सबसे पहले इस मिशन के अंदर व्हाट ऑल इज़ देयर. तो सबसे पहले क्या होता है कि कुछ सोर्स होते हैं, कुछ मिनरल्स रिकवर्ड होंगे और उनका बजट एलोकेशन किया गया. द टोटल बजट एलोकेशन इज़ 1485 करोड़ रुपीज़. दिस यू हैव टू बी श्योर. तो सबसे पहले अगर हमें लिथियम आयन बैटरीज को सोर्स करना है तो इससे हम निकाल सकते हैं लिथियम, कोबाल्ट, निकल. तो इसके लिए हमने एलोकेट किया है 700 करोड़ रुपीज़. अगर हम ई वेस्ट की बात करें जिससे हम रिकवर कर सकते हैं रेयर अर्थ्स, कोबाल्ट, प्रीशियस मेटल्स, यहाँ पे हम रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, राइट. तो वी वांट टू रिसाइकल मिनरल्स सो दैट वी कैन रिकवर आर की मिनरल्स. तो उसके लिए हमने बजट को एलोकेट किया है, राइट. तो अगर हम ई वेस्ट में से मिनरल्स को रिकवर कर रहे हैं, so what all minerals can be recovered from e-waste? So rare earth, cobalt, precious metals can be recovered from e-waste. So इसके लिए हमने 650 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया है. एंड फॉर अदर वेस्ट स्ट्रीम्स हमने एलोकेट किया है 135 करोड़ रुपीज़. सो हेयर MCQ वॉज दिस ओनली कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड कैसे किया है. सो 700 करोड़ रुपीज़ फॉर लिथियम आयन बैटरीज, 650 फॉर ई-वेस्ट and 135 crore rupees for others. So you have to be sure of this. Now let us just see what all is there. Now two types of participants are there. One is large recyclers जो large scale पर recycling कर सकते हैं जिनका revenue 200 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है. Then there are small recyclers जिनका revenue 200 करोड़ रुपीस से कम है. So required investment for large recyclers is 100 करोड़ रुपीस. You have to remember this. And इनकी target capacity is 10,000 tons per year. मैक्सिमम इंसेंटिव इनको मिलेगा केपेक्स प्लस ओपेक्स. केपेक्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ओपेक्स इज ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर. तो जो इंसेंटिव इनको मिलेगा दैट वुड बी ऑफ 50 करोड़ रुपीज़. अगर हम स्मॉल रिसाइकलर्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज़ 25 करोड़ रुपीज़. इनका टारगेट कैपेसिटी वुड बी 5,000 टर्न्स पर ईयर एंड इनको मैक्सिमम इंसेंटिव मिलेगा ऑफ 25 करोड़ रुपीज़. सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल बिकॉज इट कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड. Now what would be the performance criteria for incentives? Incentives कब मिलेगा? जो ग्रुप ए है यानी जो लार्ज रिसाइकलर्स है, अगर उनका ईयर 2 सेल्स टारगेट 60 करोड़ रुपीज़ होगा एंड ईयर 5 सेल्स टारगेट अराउंड 150 करोड़ रुपीज़ होगा. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ग्रुप बी इट्स 30 करोड़ रुपीज़ एंड 75 करोड़ रुपीज़. देन दे विल गेट द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दैट इज़ फॉर incentives. Now the next question is that Bharat Thamineni has become first Indian to climb 9 of the world's 14 peaks above 8,000 meter, and he hails from which Indian states? And he hails from Andhra Pradesh. Who among the following jointly received 2025 Nobel Prize in Economic Sciences? So Economic Sciences के लिए award मिला है Joel Mokyr, Philip Aghion and Peter Howitt. So B is the right answer. Laszlo Krasznahorkai is the second author from which country to win Nobel Prize in Literature? You also have to remember that she has won Nobel Prize in Literature and she is the author from Hungary and second author from Hungary to win this Nobel Prize. Which Malayalam actor received COAS commendation card from Indian Navy Chief in 2025? So this is Mohanlal. He also recently got one more award. That was Dada Saheb Phalke Award. Who among the following won 2025 Nobel Peace Prize for promoting democratic rights in Venezuela? So Peace Prize मिला है Maria Corina Machado को. So B is the right answer. According to Forbes India's richest 2025 list, who is India's richest person? So India के richest person है Mukesh Ambani. On second number comes Gautam Adani, and on the third spot the female industrialist that reclaimed the third spot was Savitri Jindal. So B is the right answer. Who won Lifetime Achievement Award at CEAT Cricket Rating Awards? So Lifetime Achievement Award मिला है BS Chandrasekhar and Brian Lara को. So B is the right answer.
Who was named Men's International Cricketer of Year? Because इसमें कुछ समझाने का नहीं है, I'm just reading it quickly so that you also know what is important and what is information. Men's cricketer, international cricketer of the year has been Joe Root. Which Indian cricketer was named Women's International Batter of the Year was Smriti Mandhana, and Women's International Bowler of the Year was Deepti Sharma. Which two players won Men's T20I Batter and Men's T20I Bowler awards? So it was Sanju Samson and Varun Chakravarti. So B is the right answer. Special memento for winning 2025 Champions Trophy as captain was received by Rohit Sharma. Who was honoured for scoring most runs by Indian in 2025 Champions Trophy? So most runs के लिए जिसको honor किया गया वो श्रेयस अय्यर. Who won Domestic Cricketer of the Year at CAT Awards? So Domestic Cricketer of the Year was Harsh Dubey. So A is the right answer. The emerging young player of the year was Ankrish Raghuvanshi. So C is the right answer. Now these are some appointments, some important appointments that has happened in second week of October that is relevant for us to remember. So quickly let's just read. Tarun Garg has been appointed as MD and CEO of Hyundai Motor India Limited. Anand Goenka as FICCI ka president. Mahavir Lunawat as chairman of AIBI, that is Association of Investment Bankers in India. Dan Katz as first deputy MD of International Monetary Fund. So it's important, agar kuch first hai, also the appointments and resignations, these appointments are important. Tarun Garg, you have to remember, of Hyundai. Anand Goenka of FICCI. Mahavir Lunawat of AIBI. Then Dan Katz as IMF का first deputy managing director. Then Sonali Sen Gupta as ED of RBI. Rajiv Juneja as president of PhD Chamber of Commerce and Industry. Then Sebastian Lecornu as Prime Minister of France. Then Sanju Samson as English Premier League ambassador. Sanjay Kumar Hansda as ED of Reserve Bank of India. Then General Rufin Fortunat Zafin Sambo as Prime Minister of Madagascar. So just have a quick read and just read these names so that it becomes whole and it's easy to understand and then learn. Right. Now, next question is, NPCI International Payments Limited, that is NIPL, has signed an MOU with which Japanese company to enable UPI acceptance across merchant locations in Japan? So Nippon Telegraph and Telephone, that is Nippon Telegraph and Telephone NTT Data, has signed an MOU with NIPL, that is जो इंटरनेशनल विंग है NPCI की, जो कि है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ताकि UPI एक्सेप्टेंस को इनेबल किया जा सके अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस इन जापान. सो निपन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन डेटा इज इम्पॉर्टेंट. Now, as per NSO data, India's retail inflation has dropped to what level in September 2025? तो इंडिया का जो retail inflation है, that is CPI, वो अब drop हो गया है to 1.54%. Why it is important? Why this data is important? Because it has recorded a historic low of 99 months. So after 99 months, the retail inflation rate is now 1.54%. Curie Money has partnered with which asset management company to launch instant redemption using UPI? So Curie Money has partnered with ICICI Prudential AMC, that is asset management company, to launch instant redemption using UPI. Next is Muse Wearables has partnered with which organization to launch India's first wearables payment ecosystem? I believe important question है. NPCI के साथ पार्टनरशिप किया है म्यूज वेरेबल्स ने, ताकि इंडिया का पहला वेरेबल पेमेंट इकोसिस्टम को लॉन्च किया जा सके. नाउ ये जो पेमेंट इकोसिस्टम लॉन्च होगा, उस डिवाइस का नाम होगा रिंग 1. सो यू हैव टू रिमेंबर, रिंग 1 वुड बी लॉन्च by NPCI Muse Wearables. This is same here. The technology that would be used would be near field communication payment, and users can simply tap the ring on any NFC enabled point of scale terminal ताकि payment किया जा सके, and the transactions are processed through Muse wallet. उसके बाद security would also be there, and it would be a secure, contactless and phoneless payment innovation that would be done using a smart ring, and this would be a major step towards India's digital payments future.
Which bank has been recognized as Asia's safest bank for 17th consecutive year, that is from 2009 to 2025. So Asia's safest bank has been recognized as DBS Bank. So let us just read some information. DBS Bank of Singapore has been recognized as Asia's safest bank for 17th consecutive year. It is also ranked second safest commercial bank globally in world's 50th safest commercial banks list. यानी एशिया का सेफेस्ट बैंक इज DBS बैंक ऑफ सिंगापुर एंड उसके बाद इट्स ऑल्सो सेकेंड सेफेस्ट कमर्शियल बैंक ग्लोबली. एशिया में फर्स्ट, ग्लोबली अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक्स की तो इट्स सेकेंड सेफेस्ट बैंक्स. पर अगर हम अदरवाइज बात करें ग्लोबल रैंकिंग्स की तो फर्स्ट में है KfW बैंक ऑफ जर्मनी, देन स्विट्ज़रलैंड ज़्यूरिच कैंटोनल बैंक एंड देन BNG बैंक ऑफ नीदरलैंड्स. The report was published and Global Financial Magazine में द रिपोर्ट का नाम था वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक्स इन एशिया. 34th एडिशन वॉज रिलीज जिसमें DBS बैंक को एशिया का सेफेस्ट बैंक का दर्जा मिला है एंड इट्स ऑल्सो रैंक सेकेंड सेफेस्ट कमर्शियल बैंक ग्लोबली इन वर्ल्ड्स 50th सेफेस्ट कमर्शियल बैंक्स 2025 लिस्ट. Which city has launched India's first QR based kiosk for paying traffic lines? So, which city has launched India's first QR based kiosk for paying traffic fines? So, the answer is Gurugram. So, Gurugram ने launch किया है इंडिया का पहला QR based kiosk for paying traffic fines. Flipkart has collaborated with which fintech company to launch Flipkart Bharat Yatra Card? So, Flipkart ने कोलैबोरेट किया है पाइन लैब्स के साथ सो दैट फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड कैन बी लॉन्च्ड. Who has launched sportswear and athleisure brand 10XU? So this has been launched by Sachin Tendulkar. Which company launched India's first business-focused e-rupee voucher issuance platform? So it's launched by KotoPay. So B is the right answer. Which bank has signed MOU with Border Security Force under Rakshak salary package? So that is Bank of India. Which of the following AI-based tools was launched by NPCI at Global FinTech Fest 2025 to help users with UPI-related queries? Now this is important. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें लॉन्च की गई हैं. आई जस्ट टेल यू इन डिटेल एंड देन विल कम बैक टू आवर MCQ. सो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ है. It was the 6th edition that took place in 7th to 9th of October 2025 at Geo World Convention Center and Nita Mukesh Ambani Cultural Center in Mumbai, Maharashtra. So इस सेंटर पे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ है एंड इट वॉज हेल्ड इन फ्रॉम 7 to 9th of October 2025 and it was the 6th edition of this fintech fest. It was organized by 3 organizations or 3 bodies, that is Payment Council of India, National Payment Corporation of India and Fintech Convergence Council. It is also very important. Each and every detail of this fest is important. I'll let you know in detail. Please be with me. So it's organized by 3 councils or 3 bodies, that is Payment Council of India, then National Payment Council of India and Fintech Convergence Council. Right. Now what was the purpose of this fest? The purpose was कि हम जो एक प्लेटफॉर्म है फिनटेक इनोवेशन के लिए, कोलैबोरेशन के लिए एंड पॉलिसी डायलॉग के लिए प्रोवाइड कर सकें. द थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थीम वॉज एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय AI, augmented intelligence, innovation and inclusion. So what 3 things are there in theme? That is augmented intelligence, innovation and inclusion. So the theme is clear. Now some key launches took place in this particular fest. First by RBI, initiatives were there, then with NPCI some initiatives were launched, then Bank of India, HDFC, ICICI Bank, everyone launched some initiatives or some announcements were made. सो फर्स्ट इज़ UPI हेल्प. UPI हेल्प एक AI बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है जो कि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल से डेवलप किया गया है. सो UPI हेल्प वॉज लॉन्च्ड. देन IoT पेमेंट्स विथ UPI वॉज लॉन्च ताकि इनेबल कर सके हम पेमेंट्स वाया स्मार्ट डिवाइसेस. देन बैंकिंग कनेक्ट नाम के प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया दैट इंट्रोड्यूसेस इंटरऑपरेबिलिटी इन नेट बैंकिंग फॉर ईजियर मर्चेंट सेटलमेंट्स. Then UPI Reserve Pay, users can block credit card portions for specific expenses. Then Digital Payments Intelligence Platform was launched by RBI.
दैट प्लेटफॉर्म क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म ये एक AI ड्रिवन सेंट्रलाइज फ्रॉड मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म होगा for real time detection of suspicious digital transactions. So digital payment intelligence platform was launched. Digital payment intelligence platform was launched, DPIP, by RBI. UPI Reserve Pay, Banking Connect, IoT payments with UPI, and UPI Help was launched by NPCI. I'll make you revise everything, just be with me and everything would be clear. उसके बाद क्या हुआ, 3 बॉडीज़ का कोलैबोरेशन, दैट इज़ OpenAI, NPCI and Razorpay. ChatGPT payment integration was done. Partnership to bring agentic payments, that is voice plus chat payments inside ChatGPT, ताकि यूज़र्स जो हैं वो अपना कंप्लीट पेमेंट कन्वर्सेशनली कर सके विद इन ChatGPT इंटरफेस. तो 3 बॉडीज़ ने पार्टनरशिप किया है, OpenAI, NPCI एंड Razorpay. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ 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 टेक अ नोट ऑफ इट. आई विल सेंड यू द PDF, प्लीज़ नोट इट डाउन. OpenAI, NPCI एंड Razorpay. देन फिंटरनेट एक नंदन नीलेकानी का इनिशिएटिव है. दैट्स एन न्यू ओपन फ्रेमवर्क प्रपोज टू बिल्ड इंडियाज फ्यूचर डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंबाइंस AI, ब्लॉकचेन एंड इंटरऑपरेबिलिटी. Then what were the announcements made by HDFC Bank? So HDFC Bank ने My Business QR, that is with Vyaparafy लॉन्च किया है. दैट इज़ My Business QR Vyaparafy. ये एक यूनिफाइड QR होगा फॉर मर्चेंट्स टू मैनेज पेमेंट्स, इनवॉइसेस एंड एनालिटिक्स. Pitch for Business platform was launched by HDFC Bank and it has also collaborated with 60 plus fintech and startups. And then Visa has made some announcements. Payment Passkey with Razorpay, PhonePe, JustPay. Then corporate Sapphire Forex card with ICICI Bank. Now this is important. A multi-currency corporate travel card would be there. A corporate Sapphire Forex card with ICICI Bank. Then multi-currency prepaid card with Zenith Bank and Pismo. AI-powered co-branded card with Zozo Day. उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट्स किए हैं फॉर सेलेस्टिया क्रेडिट कार्ड फॉर प्रीमियम सेगमेंट, लक्ष्मी क्रेडिट कार्ड फॉर वुमेन. MOU was done with Pay Nearby Digital Nari initiative and biometric UPI transactions proof of concept. So just let me make you revise some important things and then we'll go back. So सबसे पहले NPCI ने लॉन्च किया UPI Help. Please make a note of it or I'll send you the PDF. Please learn it, please understand it, what you have to learn in this, don't get confused. आपको इसमें याद रखने हैं इनिशिएटिव्स का नाम और किसने लॉन्च किया. सो UPI हेल्प लॉन्च किया है NPCI ने, UPI रिजर्व पे बाय NPCI, IoT पेमेंट्स एंड बैंकिंग कनेक्ट. these 4 things are launched by NPCI और इसके मतलब हमने समझ लिए हैं अभी ऊपर. सो UPI हेल्प और रिजर्व पे, please don't get confused, रिजर्व पे, हेल्प, बैंकिंग कनेक्ट एंड IoT पेमेंट्स वाया UPI. उसके बाद RBI ने लॉन्च किया है DPIP जो हमने ऊपर पढ़ा, दैट इज़ डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म. इट्स लॉन्च बाय RBI जो कि AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है. उसके बाद ChatGPT पेमेंट इंटीग्रेशन वॉज डन बिटवीन NPCI, Razorpay एंड OpenAI. फिंटरनेट बाय नंदन नीलेकानी ताकि एक ओपन डिजिटल फाइनेंस नेटवर्क को फॉर्म किया जा सके. देन PayU प्लस Wibmo ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, दैट इज़ फॉर नेक्स्ट जनरेशन UPI इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स विद द नेम UPI नेक्स्ट स्टैक एंड ट्रैप नेक्स्ट. तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं. एंड किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया है, PayU प्लस Wibmo. PayU प्लस Wibmo फॉर नेक्स्ट स्टैक एंड ट्रैप नेक्स्ट. Please remember the name Next Stack and Trap Next by PayU and Wibmo. उसके बाद स्मार्ट POD बाय फ़ोनपे, विश क्रेडिट कार्ड, ये हमने प्रीवियसली भी पढ़ा था. विश क्रेडिट कार्ड वॉज लॉन्च बाय फ़ोनपे एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक. देन पेमेंट पास की बाय वीज़ा, कॉर्पोरेट सेफायरो फॉरेक्स कार्ड वीज़ा प्लस ICICI बैंक, माई बिजनेस QR HDFC Bank plus Vyaparafy, Pitch for Business by HDFC Bank, then Lakshmi Credit Card and Celestia Credit Card by Bank of India, then Bank of India plus Pay Nearby ने UPI MOU साइन किया है. एंड ऑल्सो BOI बायोमेट्रिक UPI हैज़ बीन पायलटेड बाय बैंक ऑफ इंडिया जहाँ पे वो टेस्ट कर रहे हैं UPI वाया फिंगरप्रिंट और फेस ID. So you have to remember these initiatives. I hope it's clear. It was very difficult to form MCQ on every point. So I've just given a table कि आपको ये सारे points याद होना
होना चाहिए, बिकॉज इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम कि हर एक पॉइंट पे MCQ फॉर्म किया जाए. सो रेदर इट्स इम्पॉर्टेंट कि टेबल दी जाए एंड यू हैव टू लर्न दिस टेबल एंड इनिशिएटिव्स का नाम. राइट. Now some MCQs are still there. PhonePe partnered with which bank to launch Wish credit card? So Wish credit card के साथ PhonePe ने MOU साइन किया है with उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक. Pitch for business initiative is by HDFC Bank. My business QR is by HDFC Bank and in collaboration with Vyapara Fi. So please remember Vyapara Fi. Then collaboration with NPCI and Razorpay has been done by ChatGPT, OpenAI. Celestia credit card and Lakshmi credit card was by Bank of India and Digital Nari initiative Bank of India ने MOU साइन किया है with Pay Nearby. So B is the right answer. Then corporate Sapphire Forex card was by ICICI Bank partnered with Visa. Right. Now I hope that's all clear and we can move to next sets of MCQs. That says Air India has partnered with which airline to improve connectivity between India and Taiwan? So the right answer is Starlux Airlines. Then Pramerica Life Insurance Limited has partnered with Equitas Small Finance Bank to expand its bank insurance network. With which bank's license was cancelled recently? So Jijamata Mahila Sahakari Bank का अभी recently bank license was cancelled by RBI. Which company has rebranded its insurance business in 2025? तो बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने अपने कंपनी का जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसको रीब्रांड किया है. What are the new names of this company? So new names are Bajaj General Insurance and Bajaj Life Insurance. Next is, what is the main objective of foreign currency settlement system? So Nirmala Sitharaman has launched foreign currency settlement system at GIFT City, that is गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर, ताकि इनेबल कर सके रियल टाइम और नियर रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? इसका ऑब्जेक्टिव है टू इनेबल रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शंस इन IFSC. What is the main objective? It's repeated. I'm sorry. Just cancel it out. Now, what is the interest rate on Government of India floating bond 2028 for the period of 2025 to 2026? I think it's by mistake. 2025 to 2026 के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 6.22%. नाउ Reserve Bank of India has launched which round of OBICUS survey for Q2 of 2025-26? So OBICUS stands for Order Books, Inventories and Capacity Utilization Survey. तो RBI ने लॉन्च किया है 71st राउंड ऑफ दिस सर्वे फॉर Q2. व्हाट इज़ दिस सर्वे? ये सर्वे हमें बताता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है. सो नाउ रिसेंटली इट वॉज रिपोर्टेड दैट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हैज़ फॉल from 77.7% to 74.1%. So please remember the data. Which bank has won the contract to implement FASTag based MLFF toll collection at 2 plazas at Gurugram Jaipur Road? So that is Jio Payments Bank. Reserve Bank of India has allowed Indian banks to provide rupee dominated credit to which of the following countries? One of the most important questions. That says कि RBI ने अलाउ किया है इंडियन बैंक्स को कि वो रुपी डोमिनेटेड क्रेडिट कार्ड अलाउ कर सके ऑफ 3 कंट्रीज, दैट इज भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका. सो बी इज द राइट आंसर. So that's it for the day. I hope October के second week के complete current affairs are covered, and likewise I'll come also with third week of current affairs and then lastly fourth week of current affairs. I know there was a long break of PIB and we will soon resume with our PIB current affairs, and I'm really sorry for that. We are also resuming with our schemes. I'm really sorry for every delay that has happened, but from now we'll be regular and keep watching, keep liking. Please join our Telegram channel. Link would be provided you in the description below. Please join the channel for PDFs and also the discussion channel for any further doubts and discussions. Also, you can ask your doubts in the comment section. Also, please recommend me what you want to watch next. Halaki, we also have now a couple of plenty things to cover. We'll cover that first. Thank you for watching and keep learning.